Hi, guys, and welcome back to yet another exciting episode of Female Cricket Live. Today, we shall be discussing Mumbai's triumphant win over Gujarat Giants as they continue their dominance over the franchise. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आज का मैच जो होने वाला है दिल्ली कैपिटल्स और यूपी वॉरियर्स के बीच। तो पहले डिस्कस करते हैं कल का मैच। मुंबई की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने फिर एक बार टॉस जीता और गेंदबाजी करने का फैसला किया। शबनम इस्माइल ने शबनम इस्माइल ने मुंबई को गेंद के साथ एक बेहतरीन शुरुआत दी और तीनों टॉप ऑर्डर बैटर्स को बहुत ही जल्दी आउट कर दिया। अमिलिया कर का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसके चलते उन्होंने 4 विकेट्स लिए और एक तरीके से इंश्योर किया कि गुजरात जायंट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जा सके। मुंबई ने गुजरात को केवल 126 रन बनाने दिए, जो बेंगलोर की पिच पे एक काफी चेजेबल टोटल था। एक डिसेंट टोटल चेस करते मुंबई ने अपने सलामी बल्लेबाज को जल्दी खो दिया और फिर एक बार हरमनप्रीत कौर ने कप्तानी पारी खेली। उन्होंने नटाली सिल्वरब्रैंड के साथ 28 रन की और अमिलिया कर के साथ 66 रन की साझेदारी की, जिसके चलते मुंबई मैच जीत गई। अमिलिया कर को अपने ऑलराउंड कंट्रीब्यूशन 31 रन की पारी और 4 for 17 विद द बॉल के लिए प्लेयर ऑफ द मैच भी घोषित किया गया। अमिलिया कर का एक क्रूशियल योगदान रहा। मिडिल ओवर्स में उन्होंने ब्रेक थ्रूज प्रोवाइड किए और डेथ ओवर्स में भी काफी हद तक रिस्ट्रिक्ट किया उन्होंने गुजरात को, वरना मुंबई कुड हैव बीन चेजिंग नियर अबाउट 140 and maybe that could have been a different whole story on yesterday's pitch. So, Julie, what would you like to add about yesterday's match? बहुत बेहतरीन मैच रहा मुंबई इंडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, क्योंकि पहला मैच भी उन्होंने जीता था दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ और दूसरा मैच कॉन्सिक्यूटिव सेकंड मैच अभी उन्होंने गुजरात जायंट्स के खिलाफ जीता है। तो एक अच्छी शुरुआत हम कह सकते हैं मुंबई इंडियंस की ओर से। और अगर हमें WPL 2023 याद होगा तो हरमनप्रीत कौर मेरे ख्याल से पहले 7 टॉस उन्होंने हारे थे, तो काफी चर्चा भी हो रही थी हरमनप्रीत कौर और टॉस, उनका अच्छा रिलेशनशिप है नहीं, बट शायद WPL 2024 में अभी तक 2 टॉस जीतकर उन्होंने अच्छी शुरुआत करी है और मुंबई इंडियंस को भी एक अच्छे मोमेंटम में लेकर जा रही है। मुझे लगता है 126 जो स्कोर गुजरात जायंट्स ने बनाया था वो ऑब्वियसली मुंबई इंडियंस की पावर पैक्ड बैटिंग लाइनअप के सामने कभी भी एक अच्छा स्कोर नहीं होने वाला था, पर शायद और 20 या 25 रन अगर गुजरात जायंट्स बना पाते तो एक अच्छा मैच हमें देखने मिलता। शायद वो मैच भी लास्ट बॉल तक जाता, पर वैसे कुछ हुआ नहीं। पर मुझे यहाँ पे तारीफ करनी होगी गुजरात जायंट्स के जो लोअर ऑर्डर बल्लेबाज थे, तनुजा कंवर हो या कैथरीन ब्राइस हो। अगर आपको याद हो मेरे ख्याल से 76 पे 7 ऐसा कुछ स्कोर था गुजरात जायंट्स का, और उसके बाद ये दोनों बल्लेबाजों ने अच्छी साझेदारी करी और वो 126 का टोटल हासिल करने में गुजरात जायंट्स की मदद की। तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा पॉजिटिव गुजरात जायंट्स के लिए, डिस्पाइट ऑफ लूजिंग दैट मैच, हो सकता है कि तनुजा कंवर विद द बैट अच्छा स्कोर किया उन्होंने और गेंद के साथ भी उन्होंने 2 विकेट्स चटकाए और सबसे यशस्वी गोलंदाज भी थी ये गुजरात जायंट्स के लिए। तो मेरे ख्याल से ये एक पॉजिटिव हो सकता है गुजरात जायंट्स के लिए आने वाले मैचेस में। बिल्कुल बिल्कुल, एक डायर सिचुएशन में से उन्होंने और कैथरीन ब्राइस ने, जैसे रेस्क्यू एक्ट कहा जाता है, तो उस हिसाब से उन्होंने गुजरात की पारी को रेस्क्यू किया और एक रिस्पेक्टेबल टोटल उन्होंने रजिस्टर किया बोर्ड पर, जिसके चलते द बॉलर्स डेफिनेटली हैड समथिंग टू बोल एट, बट एज यू राइटली सेड इट वाज नेवर गोइंग टू बी इनफ अगेंस्ट द मुंबई इंडियंस बैटिंग लाइनअप। प्रतीक, आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या राय है मैच के बारे में? A very good evening, Azad. So for me, it was always about the way Mumbai Indians started off. The South African veteran Shabnam Ismail came and did what she does the best. So, the initial wickets dented their flow of runs and it helped Mumbai to capitalize on it. Somewhere I feel that the middle order, couldn't stitch partnerships and they kept losing wickets at very regular intervals. And even though the lower order added some runs, Catherine Bryce, but all the balls were eaten up at the top of the innings and their run flow was restricted. So once again, brilliant stuff from Shabnil. And we saw someone else pitch in yesterday, right? Amelia Kerr. Her mix of googlies and leg spinners were something I thought were immaculate. The batters failed to read her googlies, which made sure she scalped all the wickets. And coming to Mumbai Indians innings, even they were off to quite a shaky start. But thanks to Harmanpreet's and Amelia Kerr's, presence of mind in the middle when they had lost 3 wickets at the middle, they made sure that they could build the innings and win it from there. And we also saw yesterday Harmanpreet, the way she negotiated the spinners.
be it the orthodox sweeps or the reverse sweep she played from the other side of the bat. It just shows how confident of her technique she is. So how much ever we may talk about her struggling against spinners, she's always got a way out of it. Yeah, definitely. Like you rightly said, ki Harmanpreet looked pretty much assured last night against the spinners, unlike her previous outings. And definitely from a Mumbai Indians as well as an Indian point of view, that is definitely a positive going further into the tournament. सो अब एक झलक डालते हैं आज की मैच की ओर, जो होगा दिल्ली और यूपी के बीच। दिल्ली अपना पहला मैच हारा था मुंबई के अगेंस्ट, एक क्लोज मैच रहा था, बट इवेंचुअली देयर कैन ओनली बी वन विनर. So Delhi will be hoping to get their season up and running and register their first victory today against the UP Warriors. And UP Warriors भी अपना first match हारे थे against the home team, that's RCB. And Delhi won't be an easy outing either. And I think UP definitely have their task cut out for themselves. एंड बट ऑल इन ऑल आज का मैच दोनों टीम्स को एक अपॉर्चुनिटी प्रदान करेगा कि टू गेट दैट फर्स्ट विन अंडर द बेल्ट, वो जो एक फील गुड फैक्टर होता है व्हेन यू गेट योर फर्स्ट विक्ट्री इन द फर्स्ट टू गेम्स. सो या, आपकी क्या राय है आज के मैच बारे में, प्रतीक? Yeah, so even though we know that both teams are coming off a loss, we shouldn't write them off because both their losses were extremely close. It was a matter of inches for them to win the game. But going from the stats, we know that Delhi is up 2-0 against the UP Warriors, and by now both teams know how the conditions will play out in the Bengaluru surface. So I'm looking forward to the game, and we've also gotten a few very big names up today. Players like Meg Lanning, Alice Capsey, who absolutely battered the bowlers in their very first outing. Their approach against the spinners was something that stood out for me, and I'm looking forward to it today as well. बिल्कुल बिल्कुल. एंड जूली, व्हाट वुड यू लाइक टू टेल अस? एक बहुत अहम मैच है ये दोनों टीमों के लिए, क्योंकि जैसे आपने कहा, ये दोनों टीमों ने अच्छी शुरुआत नहीं करी है. WPL 2024 के अंदर दोनों टीमों को शिकस्त मिली थी. दिल्ली कैपिटल्स ने भी एक हार सहन की है और उसके बाद यूपी वॉरियर्स को भी एक शिकस्त मिली है. तो एक बहुत बड़ा मैच है दोनों टीमों के लिए और ज़रूर खाता खोलना चाहेंगे ये दोनों जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं. और एक है मेगलैनिंग जो एक पूर्व कप्तान रह चुकी है ऑस्ट्रेलिया की, और उनके सामने होंगी एलिसा हीली जो प्रेजेंट डे कैप्टन है ऑस्ट्रेलियन टीम की. तो मेरे ख्याल से कैप्टन वर्सेस कैप्टन ये कॉन्टेस्ट भी देखने में काफ़ी मजा आएगा. देखते हैं हु आउटथिंक्स द अदर प्लेयर. आई फील तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है ये दोनों टीमें जब आमने सामने आएंगी तब. और WPL 2023 की अगर हम बात करें, जब ये दोनों टीमें आमने सामने आई थी तभी दिल्ली कैपिटल्स ने दोनों मैचेस जीते थे. एंड आई थिंक वन ऑफ द पॉजिटिव्स इज कि एक मैच उन्होंने चेस करते हुए जीता था और एक मैच में उन्होंने स्कोर डिफेंड करते हुए जीता था. तो यही दिखाता है कि दिल्ली कैपिटल्स इज क्वाइट कंफर्टेबल चेजिंग एज वेल एज डिफेंडिंग इन फ्रंट ऑफ यूपी वॉरियर्स. तो एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ शायद मेगलैनिंग की दिल्ली कैपिटल्स उतरेंगे यूपी वॉरियर्स के सामने. पर ऑफकोर्स उनके सामने एक बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि तालिया मैकग्राथ, अगर हमें वो दोनों इनिंग्स याद होंगे, उन्होंने 90 रन भी लगाए थे वो पहली मैच के अंदर और दूसरे मैच में एक 58 रन की पारी भी खेली थी. तो तालिया मैकग्राथ को दिल्ली कैपिटल्स के सामने खेलना बहुत ज्यादा पसंद है. तो उनको विकेट अगर दिल्ली कैपिटल्स जल्दी ले पाती है तो काफी कॉन्फिडेंस भी मिलेगा दिल्ली कैपिटल्स को और शायद वो मैच जीत पाएंगे आज. बिल्कुल बिल्कुल, एज यू राइटली एडेड कि दिल्ली हैव हैड द वुड ओवर द यूपी फ्रैंचाइज इन द पास्ट एंड दे विल बी होपिंग टू कंटिन्यू दैट डोमिनेंस पर से. सो अब डिस्कस करते हैं आज के की प्लेयर्स. आवर फर्स्ट की प्लेयर फॉर द डे इज मैक लैनिंग. मैक लैनिंग बतौर कैप्टन और बल्लेबाज बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है वो दिल्ली फ्रैंचाइज में. कैप्टेंसी, ओपनिंग द बैटिंग, सो दैट्स अ बोनस व्हेन दैट हैपेंस. और पिछले सीजन भी काफी हद तक मेन बैटर रही थी वो दिल्ली के लिए. और पिछले मैच में शफाली वर्मा के आउट होने के बाद जो बहुत एक शीपिश डिसमिसल था, जो कहते हैं शी वाज टॉर्मेंटेड बाय द मुंबई बॉलर्स बिफोर शी वाज डिसमिस. तो शफाली वर्मा के आउट होने के बाद उन्होंने एलिस कैप्सी के साथ इनिंग्स संभाली और एक अच्छी शुरुआत दी दिल्ली को. भले वो आफ्टर द पावर प्ले दे वर नॉट मोर देन 30 रन्स, बट definitely stabilized the innings, gave them a good platform to capitalize at the end. So आपकी क्या राय है जूली मैक लैनिंग के रोल के बारे में आज?
अच्छी शुरुआत करी है यज़ान मेरे ख्याल से मैगलैनिंग ने, क्योंकि 31 रन बनाए थे उन्होंने पहले मैच में मुंबई इंडियंस के खिलाफ। तो जब भी हम टी20 क्रिकेट की बात करते हैं कि हम यूजुअली 50s या 100s को नहीं देखते, हम देखते हैं कि 30 प्लस कितने बार बल्लेबाज जा चुका है। तो मैगलैनिंग मेरे ख्याल से एक हेल्दी स्टार्ट करी है उन्होंने, 31 रन जोड़े उन्होंने। पर ऑफ कोर्स उनकी उम्मीद यही होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा रन कंट्रीब्यूट करे अपने टीम के लिए, एक अच्छी शुरुआत दे शेफाली वर्मा के साथ, जो खुद एक आक्रामक बल्लेबाज है। और दूसरी ओर मैगलैनिंग अगर अच्छी पारी या बड़ी पारी, आप ऐसे सोचे कि मुझे पूरे 20 ओवर खेलने हैं, तो किसी भी टीम के खिलाफ दिल्ली कैपिटल्स गेम, शी कैन टेक अवे द गेम फ्रॉम एनी ऑपोजिशन, आई फील इज मैगलैनिंग। तो उनकी बल्लेबाजी और ऑफकोर्स उनकी कप्तानी, वो कैसे अपने गेंदबाजों को मेरे माफ कीजिएगा जो बॉलर्स है उनको कैसे रोटेट करेंगी, वो भी काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उनके सामने होंगे दो ऑस्ट्रेलिया के बड़े प्लेयर्स, रादर तीन प्लेयर्स हम देखेंगे, ग्रेस हैरिस हो, टी मैक हो या एलिसा हीली। तो ये तीनों के सामने मैगलैनिंग ने काफी उनके साथ भी खेला है, पर अभी इस बार जब उनके खिलाफ खेलेंगे तो मुझे लगता है उनको काफी अंदाजा होगा कि उनके वीकनेसेस क्या है, तो उनके जो बोलिंग चेंजेस है वो भी देखने में काफी मजा आएगा आज। Bilkul. Like Meg Lanning has captained Alicia Healy, Talia Magra, and the likes of Grace Harris. So she knows their pluses and minuses. So she knows the game inside out, one would say. So she knows the matchups well. There's no need for anyone to tell her, because your matchups are numbers per se, but when you've seen someone's game, you know what their weakness is. Pratik, what would you like to add? Well, as Julie mentioned, Lanning does not only come as a batsman but also as a very experienced contender. And the fact that Shafali Verma departed early in their previous game with that rash shot, the slog sweep attempt, and you could see Meg Lanning steadying her innings there. She got off slowly, where she just managed to get 5 runs in her first 10 balls. But after which, she lashed on to the bowlers, the spinners, especially Amelia and Kirtana, both the leggies out there, and she started targeting them. So she has ample amount of game awareness which comes from her experience, and it would be interesting for me to look out today how she would target people like Sophie Eccleston, because she again is a experienced contender and someone who does not leak away runs. So I feel Lanning will play a very crucial role. Time and again, we've seen that the entire DC batting order depends upon their skipper. Even in the previous edition's loss in the final, they suffered it because she did not get support in the other end. So for her to stay on the crease, it's extremely crucial. And I hope she sees out the power play phase today, and then start targeting the spinners slowly. Definitely, as you rightly mentioned that she took on Kirtana Balakrishnan and Amelia Kar. अब भले कीर्तना के पास उतना शायद experience ना हो of playing at this stage, but the way she took on Amelia Kar, it was a delight to watch from a Delhi standpoint. So let's move on to our next key player from Delhi, that is Alice Capsey. प्रतिभाशाली इंग्लिश बैटर है। पिछले सीजन कहा जा सकता है कि उनके स्टैंडर्ड से उन्होंने काफी अंडर परफॉर्म किया था या इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाई थी, पर पिछले मैच में उन्होंने दिखा दिया कि क्यों इतना हाईली रेट किया जाता है उन्हें। बल्लेबाजी के अलावा वो पार्ट टाइम स्पिन भी डालती है और उन्होंने लास्ट मैच में 2 विकेट भी चटकाई थी, जिसके चलते वो एक ऐसा सिचुएशन में मैच पहुंच गया था जहां आर या पार हो मुंबई के लिए। सो प्रतीक, आप क्या कहना चाहेंगे एलिस कैप्सी के रोल के बारे में आज? Well, the way Alice Capsey got started off the previous game was absolutely mind-boggling for me, because from the word go, she was on to them. She got off with a very elegant flick shot on the leg side, which she lofted over the 30-yard circle. And from there on, it was just bread on butter for her. And, the way her and Lanning got on to the bowlers, it reminded me of AB de Villiers and Virat Kohli batting at the Chinnaswamy Stadium. It's an extremely small ground, but they just toe with the bowlers and make sure everything is sucked out of them. So brilliant batting approach from her. And another notable point is her approach to the spinners, especially the off spinners towards the leg side, is something very powerful. And from the opposition standpoint, I think they need to refrain pitching it up there for her, because she's got a very free flow of the arm, which aids her to go over the boundary line quite easily and on multiple occasions as well. And for me, her strengths would be, targeting the leg side and the cut shots. Any room on offer, you're not going to be scared. So
from a bowler's standpoint, it's quite tricky to plan and bowl to her because she isn't going to premeditate any of those shots. It's only going to be played on merit. And adding on, the way she was dismissed in the previous game from a slower one by Shabnim Ismail, which was a shorter delivery. So the oppositions can keep this in mind, that is, take off pace occasionally and try to bowl the hard lines or the short ones as well. And yeah, it's extremely crucial for them to get her out today, or else we know how things are going to pan out. अब राय लेते हैं ज्वेली की, वो क्या कहना चाहेंगी एलिस कैप्सी के बारे में? आई थिंक एक युवा खिलाड़ी होते हुए भी मेरे ख्याल से जो दिल्ली कैपिटल्स और कप्तान मैगलैनिंग ने उनके ऊपर जो कॉन्फिडेंस दिखाया है वो बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे, क्योंकि ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय अनुभव है नहीं एलिस कैप्सी की। अगर हम बात करें तो हाल ही में उन्होंने डेब्यू भी करा है इंग्लैंड के लिए, पर उनका इतना कम अनुभव होते हुए भी उनको इतने इंपॉर्टेंट रोल्स देना टीम के अंदर, जैसे कि नंबर 3 पे बल्लेबाजी करने उतरना, जो सबसे अहम पोजीशन होती है मेरे ख्याल से किसी भी फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट में, चाहे वो टेस्ट हो, वनडे हो या टी20 हो। वो कॉन्फिडेंस एलिस कैप्सी के अंदर दिल्ली कैपिटल्स को भी है, मैगलैनिंग को भी है। और उसके बाद अगर आपको याद हो तो उन्होंने डेथ ओवर्स, जो कि आखिरी ओवर था, 20वां ओवर जो था मुंबई इंडियंस के खिलाफ, उनको गेंदबाजी दी थी मैगलैनिंग पे। तो मुझे लगता है कि काफी कॉन्फिडेंस देती है दिल्ली कैपिटल्स की टीम और मैगलैनिंग एलिस कैप्सी को, और मुझे लग रहा है कि वो आज भी जरूर खरे उतरेंगे उस कॉन्फिडेंस के ऊपर। और दोबारा WPL 2023 की अगर हम बात करें तो जब एक मैच हुआ था, जो दूसरा मैच था यूपी वॉरियर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच, तब एलिस कैप्सी ने प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार भी उनको मिला था। उन्होंने ऑलराउंड प्रदर्शन करा था, बल्ले से भी उन्होंने मेरे ख्याल से 34 रन स्कोर करे थे और गेंदबाजी में भी उन्होंने 3 विकेट्स चटकाए थे। तो ये ऑपोजिशन जरूर एलिस कैप्सी को पसंद है। जब भी वो यूपी वॉरियर्स के सामने आएंगे मेरे ख्याल से एक अलग एलिस कैप्सी हमें देखने मिलेगी। और किसी भी प्लेयर के लिए मुझे लग रहा है, आई थिंक वो जो मुंबई इंडियंस के खिलाफ जो डिफीट हुई थी, अगर उनको लगेगा कि अगर वो ओवर वो अच्छे से करते हैं या वो आखिरी बॉल के वो छक्का नहीं खाते सजना से, आई थिंक उनके ऊपर अभी ज्यादा जिम्मेदारी होगी कि आज मेरे पास मौका है, आज मैं अगर मेरे टीम को जीत दिला दूं तो और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा थिंक टैंक का मेरे ऊपर से, और आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी कैप्सी आज। हाँ, जैसे आपने कहा फ्रॉम अ बॉलिंग स्टैंड पॉइंट काफी अनलकी रही वो लास्ट ओवर में वो सजना का आके लास्ट बॉल पर 6 मारना, उन्हें काफी हद तक ब्लेम नहीं किया जा सकता इसके लिए। एंड वी सॉ कि मैगलैनिंग वेंट इमीडिएटली टू कंसोल हर कि देखो इट्स नो इशू, वी नो वी यू ट्राइड योर बेस्ट फॉर द टीम। So Alice Capsey will have a confidence high because she has the backing of her team management and her captain. So let's move on to the UP now, or franchise now. So we have Grace Harris as the first key performer from them. ग्रेस हैरिस बतौर ऑलराउंडर पिछले मैच में उन्होंने बॉलिंग भी ओपन की थी और बैटिंग में भी काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा था उनका। 38 रन ऑफ 23 बॉल्स की पारी थी और उन्होंने यूपी को एक मैच विनिंग पोजीशन में जरूर लाया था, पर वो फिनिश नहीं कर पाए गेम को। और WPL में उनका परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार रहा है और उनका एवरेज 53.6 है इन द 7 WPL इनिंग्स शी इज प्लेड। सो जूली, व्हाट इज योर टेक ऑन ग्रेस हैरिस टुडे? दोबारा आई थिंक ग्रेस हैरिस का रोल बहुत अहम होगा यूपी वॉरियर्स के लिए। पिछले मैच में हम कहेंगे यूपी वॉरियर्स काफी हद तक अनलकी भी रहे, क्योंकि अगर वो श्वेता सहरावत के साथ जो साझेदारी उनकी हुई थी 77 रन की, अगर वो एक्सटेंड होके शायद 80, 90, 100 रन तक भी जाती तो शायद यूपी वॉरियर्स वो मैच जीत जाता। तो इसीलिए जैसे एलिस कैप्सी के बारे में मैंने कहा, मुझे लगता है ग्रेस हैरिस भी वही माइंडसेट से उतरेंगे कि उनके पास जरूर अपॉर्चुनिटी थी यूपी वॉरियर्स को वो मैच जितवाने की, पर आज दोबारा एक अपॉर्चुनिटी है। ग्रेस हैरिस बतौर ऑलराउंडर वो अच्छा कंट्रीब्यूशन कर पाएंगी और उनकी जो हार्ड हिटिंग एबिलिटी है मेरे ख्याल से वो चिन्ना स्वामी में काफी उनको सूटेबल है। बड़े बड़े छक्के लगा सकती है, चौके भी लगा सकती है, और जो गेंदबाजी वो करती है वो काफी टाइट लाइन और लेंथ में गेंदबाजी हमने देखी थी उनके तरफ से। पिछला मैच जब आरसीबी के खिलाफ खेला था उन्होंने 3 ओवर में केवल 22 रन ही दिए थे, विकेट्स नहीं ले पाई थी, पर काफी इकोनॉमिकल गेंदबाजी भी उन्होंने करी थी। पर मुझे नहीं लगता शायद आज उनको गेंदबाजी की शुरुआत करने मिलेगी, क्योंकि उनके सामने दोनों दाएं हाथ के बल्लेबाज होंगे। अगर हम दिल्ली कैपिटल्स की सलामी जोड़ी देखें तो कप्तान मैगलैनिंग होंगी और शेफाली वर्मा होंगी। आरसीबी में स्मृति मांधाना जो एक बाएं हाथ की बल्लेबाज है, इसीलिए उनके सामने ग्रेस हैरिस को लाया था एलिसा हीली ने, पर मुझे नहीं लगता आज ग्रेस हैरिस शुरुआत करेंगे। तो इसीलिए वो कौन से फेज में गेंदबाजी करते हैं उसके ऊपर भी काफी निर्भर होगा कि उनका प्रदर्शन आज कैसा हो। बट ऑल इन ऑल आई फील कि ग्रेस हैरिस का रोल काफी इंपॉर्टेंट होगा। वो एक जेन्युइन मैच विनर है मुझे लगता है, चाहे वो बल्ले से हो या गेंद से हो, वो किसी भी सिचुएशन से मुझे लगता है यूपी वॉरियर्स को वो डिफिकल्टी से भी बाहर निकाल पाएंगी और एक मैच विनर बन सकती है वो।
Hi, as you rightly mentioned, she must be ruining herself over that missed opportunity to win the game for her team. और जैसा हमने देखा कि एलिसिया हीली ने उन्हें डगआउट से उसी ओवर में इशारा किया था, आशा शोभना की ओवर में, कि रहिए आप, एंडिंग तक रहिए, हम मैच जीत जाएंगे। बट वो एक फॉल शॉट इंड्यूस किया वहां पर आशा शोभना ने, जहां वो बोल्ड हुई। प्रतीक, आप क्या कहना चाहेंगे? Well, for me, Harris is that kind of a player, who I would rate in the A category because she's a multi-dimensional player and does not shy away of her opportunities. Starting off of her bowling approach in the previous game, the way she trapped Sophie Devine in the front and got her LBW in the very beginning, it shows that she is a bowler who can bowl in the power play, someone who can fire it in. So that was one thing extremely done. But another thing later on was that she was providing too much flight to the batters, so they found it easy for her to clear the 30-yard circle and get away with runs. Like Julie mentioned, I don't think that she'd be given an opportunity today in the power play, but maybe called upon later on. So it would be good for her to fire in the deliveries, when runs are flowing freely for the oppositions. And the heroic stunts that she's done with her bat, all of us are just in awe of it. If she wouldn't have gotten out the previous game, I think it was an easy win for UP Warriors from there. So I would just want her to play the role of, even mediating the innings with any juniors out there in the middle, because we saw in that over in the previous game they lost 3 wickets at a very quick succession, which helped RCB win the game. So yeah, she's one player to watch out today for sure. Definitely. We've all seen her heroics with the bat in the WBBL. Even last year at the WPL, she was a revelation with the bat. So moving on to our next key player from the UP franchise, that is Sophie Eccleston. बतौर स्पिनर इंग्लैंड के, और उम्दा गेंदबाज है, एक रिलायबल फोर्स रहती है अपने कैप्टन के लिए, और काबिल बल्लेबाज भी है, लोअर ऑर्डर्स में रन कंट्रीब्यूट कर सकती है। पिछले मैच में शायद थोड़ी ऑफ कलर नजर आई थी, वो केवल एक विकेट लिया था और रन्स भी लीक किए थे। सो आज उनका परफॉर्मेंस देखने लायक रहेगा कि कैसे कमबैक करती है। तो प्रतीक, लेट्स टेक योर व्यूज फर्स्ट। Well, firstly, Sophie Eccleston for me might be the best spinner going around the world in the women's circuit, purely because of her height, her approach, the length she bowls. So she's definitely someone to look forward for today. And even in the previous game, we saw when Elise Perry tried to accelerate, she fell prey to Sophie Eccleston, which was a huge wicket in the context of the game. Even though she, wasn't successful getting many wickets, she did keep her economy rate below the mark of 7. So maybe if maybe if the batters go on to attack her today, she would get wickets, because we saw the RCB batters play against her very conservatively, which doesn't really help a bowler get wickets. But if she comes in a situation where the opposition needs run desperately, she's definitely going to get those wickets, because she's gotten a knack of bowling in the pressure situations and containing runs. Definitely, Sophie Eccleston will be playing a key role in today's match. So, Julie, what are your views on Sophie Eccleston's role today? मुझे लग रहा है आज शायद सोफी एक्कलस्टन को हम पावर प्ले के अंदर देख सकते हैं। शायद वो सेकंड या फोर्थ ओवर या जो भी हो, पावर प्ले के अंदर शायद उनको गेंदबाजी आज मिल सकती है, क्योंकि उनके सामने 2 दाएं हाथ के बल्लेबाज है जैसे मैंने कहा था, और उनके सामने जो एक प्लेयर है वो है शेफाली वर्मा, जिनको शुरुआत में ज़्यादा स्पिनर्स के खिलाफ खेलना पसंद नहीं, और ये एलिसा हीली को भी पता है, क्योंकि हाल ही में जो ऑस्ट्रेलिया इंडिया सीरीज भी हुई थी तो एलिसा हीली ने काफ़ी करीब से देखा है शेफाली वर्मा को, और हमें भी पता है कि शेफाली वर्मा शी लाइक स्पेस ऑन द बॉल। इसलिए अगर इकलस्टन को वो पावर प्ले के अंदर गेंदबाजी दे और शायद मे बी टेम्प्ट भी करे शेफाली वर्मा को कि शायद मिड ऑन या मिड ऑफ के ऊपर से उनको छक्का लगाने का टेम्प्ट भी करे और एक विकेट मिली उनको, तो वैसे भी कुछ देख सकते हैं हम। और सोफी इकलस्टन, जैसे प्रतीक ने भी कहा और यजाद आपने भी कहा, कि थोड़ी ऑफ कलर जरूर लगी थी पहले मैच में, पर हमने पहले भी जैसे डिस्कस करा था कि शी इज कमिंग फ्रॉम एन इंजरी, तो किसी भी प्लेयर के लिए इंजरी के बाद कमबैक करना इतना आसान नहीं होता। हालांकि उन्होंने इंडिया सीरीज भी खेली थी, पर तभी भी ज्यादा कुछ फॉर्म में नहीं लगी हमें इकलस्टन, पर हमें सब पता है कि शी इज अ वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर फॉर क्वाइट सम टाइम और एक क्वालिटी क्रिकेटर रही है। तो इकलस्टन यू कैन नेवर राइट हर ऑफ, तो उनका रोल दोबारा इंपॉर्टेंट होगा। और
देखते हैं अगर पावर प्ले में उनको गेंदबाजी मिलती है और 1-2 विकेट्स जल्दी से उनको मिलते हैं तो डेफिनेटली उनका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा इस मैच में भी और आने वाले मैचेस में भी। Definitely. Right off Sophie Eccleston at your own peril. So now let's take a look at today's match from a fan perspective. So for the Delhi Capitals first. So जेमिमा रॉड्रिगेज ने अच्छा फॉर्म दर्शाया था पिछले मैच में, आके उन्होंने इनिंग्स को फिनिश करा था। 42 ऑफ 24 की बहुत महत्वपूर्ण पारी खेली और बहुत ही क्विक क्विक रन्स बनाए उन्होंने, जिसके चलते दिल्ली ने एक फॉर्मिडेबल टोटल रजिस्टर किया और उनकी पारी में उन्होंने 5 4s और 2 6s जड़े थे। So, Julie, what is your take on Jemima's role today in the Delhi lineup? जमीमा ने एक अच्छी शुरुआत करी। हमने देखा जैसे पिछले मैच में मुंबई इंडियंस के खिलाफ 24 गेंदों में 42 जैसे हमने अभी स्क्रीन पे देखा था और अगर हम उनके आंकड़े देखें तो मुझे काफ़ी सरप्राइजिंग लग रहा है क्योंकि 5 चौके और 2 छक्के, मतलब अगर हम कैलकुलेट करें तो चौकों में से 20 रन आए हैं, छक्कों में से 12 रन आए, मतलब 32 रन उन्होंने चौकों और छक्कों में जड़े हैं आउट ऑफ 42, मतलब तकरीबन 75% फोर्स और सिक्सेस में कंट्रीब्यूशन करा है जेमिमा ने। और अक्सर हम एसोसिएट करते हैं जेमिमा रॉड्रिग्स को कि दैट शी इज अ टच प्लेयर, पर ये जो अटैकिंग क्रिकेट उन्होंने खेला था तो काफी रिफ्रेशिंग भी लगा मुझे एज अ फैन ऑफ जेमिमा रॉड्रिग्स एज वेल, और एक बहुत अच्छी साइन है मेरे ख्याल से दिल्ली कैपिटल्स के लिए, क्योंकि अदरवाइज अगर हम देखें तो उनके जो टॉप 3 है वो तीनों अटैकिंग बल्लेबाज है, चाहे वो मैग्लैनिंग हो, शेफाली हो या एलिस कैप्सी हो, पर जो जेमिमा चौथे नंबर पे बल्लेबाजी करती है वो ज्यादा आक्रामक नहीं खेलती। 120 130 उनका स्ट्राइक रेट रहता है, पर यहाँ पे 150 से अधिक उनका स्ट्राइक रेट रहा था, तो काफी कॉन्फिडेंस से उन्होंने बल्लेबाजी करी। और मेरे ख्याल से उनका जो हाल ही में जो डोमेस्टिक रिकॉर्ड रहा है, चाहे वो मुंबई की कप्तानी करके उन्होंने पहली बार मुंबई को सीनियर वुमेन्स T20 का खिताब दिलाया था, उसके बाद जोनल्स में भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन करा, तो आई थिंक शी इज इन अ वेरी गुड फ्रेम ऑफ माइंड। और आई थिंक किसी भी क्रिकेटर के लिए व्हेन दे आर इन अ प्रॉपर फ्रेम ऑफ माइंड या पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड, वो ऑफ कोर्स फील्ड पे भी उनके फॉर्म में ट्रांसलेट होता है, तो अच्छे साइंस है जेमिमा के लिए भी और दिल्ली कैपिटल्स के लिए भी। Bilkul. As you rightly added, for Mumbai, she scored 400 plus runs in the senior women's T20 trophy. और पिछले सीजन में उन्हें काफी हद तक क्रिटिसाइज किया गया था कि शी वाज स्लोइंग डाउन द दिल्ली इनिंग्स आफ्टर शफाली वर्मा एंड मैग्लानी had gotten them off to a start. So she silenced those critics for now. It was very refreshing, not just from a Delhi standpoint, but from an Indian point of view as well, considering that there's a World Cup coming up this year. So, Pratik, what was your take on Jemi's innings last match? Well, Yazad, I feel that is the best way to reply to your critics with the bat. From the moment she walked in, it just looked like she was batting on a completely different surface where the ball was just sailing on to the bat extremely smoothly, and she was able to play the bowlers with ease. For me, the one thing that stood out from her side was the way she played her late cuts. They were played right under her eye until the ball came, and that just shows the kind of a batsman you are, and the kind of the form you are in. Maybe that's the differentiating factor between an excellent batter and an average batter, because as late as you play, you get more time to adjust to the delivery that is coming towards you and maneuver the ball in the right place. And not only the late cuts, for me, even the fancy sixers on the leg side which she played with her wrist was very pleasing on the eye. Nothing about power here. It's just about her approach and how she uses the angles in an extremely efficient way. We know that she hasn't been able to generate very high strike rates, but yesterday was very promising. And from the Indian standpoint, I must say all of us are extremely happy and are looking forward to see something today as well from her side. Definitely. Unlike Alice Capsey, she does not rely on brute power to clear the fence. You see, she's more of a player who relies on timing. So all those shots were so well timed, and it was just so pleasing on the eye to see that innings. So let's move on to the यूपी वॉरियर्स। तो यूपी वॉरियर्स के पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं अब श्वेता शेरावत को। उनका फॉर्म डेफिनेटली एक पॉजिटिव था फ्रॉम द लास्ट मैच। एक यंग इंडियन प्लेयर परफॉर्मिंग वेल अंडर प्रेशर। शायद मैच ना जिता पाई हो वो अपनी टीम को, पर काफी हद तक उन्होंने प्रेशर ऑब्जॉर्व किया फ्रॉम ग्रेस हैरिस और टहलिया मगरा। और 31 of 25 की पारी खेली उन्होंने, जिसमें उन्होंने 2 चौके और 1 छक्का मारा। सो जूली, आप क्या कहना चाहेंगे श्वेता के बारे में?
जो हम कॉन्वर्सेशन कर रहे थे आज़ाद और प्रतीक यूपी वॉरियर्स के पहले मैच के वक्त, मुझे याद है कि हम कह रहे थे कि श्वेता सहरावत बतौर ओपनिंग बल्लेबाज वो खेलती आई है अपने दिल्ली स्टेट के लिए भी, अंडर 19 इंडिया टीम के लिए भी, और पिछले साल भी WPL 2023 में उनको मौके मिले थे, मेरे ख्याल से 2 या 3 उनको सलामी बल्लेबाज के रूप में भी खेला गया था यूपी वॉरियर्स के टीम के अंदर, एलिसा हीली के साथ आए थे। पर इस बार उनको शायद पहले ही रोल दे दिया गया है कि आपको नंबर 5 पे ही बल्लेबाजी करनी है कम वॉट में। शायद वो जो रोल क्लैरिटी है वो शायद अभी श्वेता सहरावत के मन में मेरे ख्याल से एस्टैब्लिश हो चुकी है, और शायद वही हमें देखने मिला जब वो मैदान पे उतरी थी। उन्होंने अच्छी पारी खेली, 25 गेंदों में 31, जैसे हम स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, और ग्रेस हैरिस के साथ, जिसकी मैंने पहले भी चर्चा करी थी, एक अच्छी साझेदारी 77 रनों की उन्होंने बनाई थी, और एक मैच विनिंग पार्टनरशिप जरूर हो सकती थी, हालांकि वैसे कुछ हुआ नहीं यूपी वॉरियर्स के लिए, पर श्वेता सहरावत एक अच्छी शुरुआत उन्होंने करी है। और अगर हम उनका डोमेस्टिक रिकॉर्ड भी देखें तो दिल्ली के लिए काफी अच्छी बल्लेबाजी भी करी थी उन्होंने अंडर 23 लेवल पे भी। तो एक अच्छे फॉर्म से गुजर रही है श्वेता सहरावत, और आज दोबारा उम्मीद होगी कि मिडिल ऑर्डर में जो एक स्टेबिलिटी चाहिए यूपी वॉरियर्स को, अगर वो ओपनिंग विकेट्स जल्दी खो दे तो श्वेता सहरावत वैसे कुछ स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर पाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, लाइक लास्ट सीजन उन्हें थोड़ा अनसर्टेनिटी था वेदर ऑफ व्हाट पोजीशन शी इज गोइंग टू बैट इन, बट आई थिंक दिस सीजन शी इज बीन गिवन दैट क्लैरिटी फ्रॉम द मैनेजमेंट कि दिस इज योर रोल इन द टीम। सो वो एक जब एक आप कॉन्फिडेंस देते हो प्लेयर को, इट डेफिनेटली रिफ्लेक्ट्स इन द परफॉर्मेंस। सो प्रतीक, व्हाट इज योर टेक ऑन श्वेता? Well, for me, shifting her role from an opening batter to playing in the middle order, it speaks volumes about her caliber to adopt to the situation. So I would give this to her. She came in a situation where they needed runs, needed to absorb pressure, and with the maturity she got on, she latched on to bowlers like Elise Perry and deposited them onto the stands. So that was a huge factor that Sveta Sarawat played out yesterday, and I'm looking forward to her playing today as well. She's got a good mix of playing on the ground, taking the aerial route, and her approach is crystal clear. She doesn't premeditate, just like we spoke before. It's to the merit itself. The only thing being, they need to steady the innings. The previous time around, they lost wickets at the wrong times and in quick succession, which aided to their downfall. So I would like for her to play freely today. She's anyways gotten a lot of senior partners on the other end of it, and I also feel that she has the green signal to go out there and express herself with all those shots she's got in herself. डेफिनेटली। अब बात करते हैं आज के मैचअप्स के बारे में। सो आवर फर्स्ट मैचअप इज शफाली वर्मा अगेंस्ट स्पिन, और उनका परफॉर्मेंस अगेंस्ट द स्पिनर्स काफी कंसर्निंग रहा है, नॉट जस्ट फ्रॉम अ दिल्ली कैपिटल्स पॉइंट ऑफ व्यू बट फ्रॉम एन इंडियन स्टैंड पॉइंट एज वेल। So unlike her game against the pace where she looks at home, her struggles against the spin are clearly evident. तो पिछले मैच में भी कहा जा सकता है कि शबनम इस्माइल और साइका इशक के कॉम्बो ने उन्हें काफी हद तक टॉर्मेंट किया, और इवेंचुअली उन्होंने अपना विकेट गवा दिया इस चक्कर में। So the Sophie Eccleston matchup with her, like Julie mentioned earlier, will be a very interesting matchup to watch out for. So Pratik, what do you have to say about Shafali? Well, starting off, the start she was off today. In the previous game, she was bowled to Shabnim Ismail, playing across the wickets. So I feel that it is something concerning because whenever you know that she's in flow, she gets to the pitch of the ball and she's clear about her approach. That is not something we got to see the other day, and I'm hopeful that that is corrected and she's clear in her mind as to what she wants to execute. And playing the spinners today, especially Sophie Eccleston, it would be challenging for sure because Sophie bowls a really probing length and she varies her pace as well. And to my understanding, Shafali Verma is someone who is heavily dependent on the bottom hand when it comes to playing on the leg side. And I'm afraid with Sophie's varying pace today, her approach could be dented because she needs to wait for it. And if it's really pitched up, only then go on and play the full swing shot, or, as we say, get off strike. And the best way to watch a game is from the non-strikers end. So I would like for her to keep it simple and just play out the spinners. Definitely. Like you rightly mentioned, when she's playing at her best, you can see the fluidity in her footwork. She gets to the pitch of the ball. Even last season, when she had such an amazing season, she looked assured with her footwork.
but the same was missing in the last game. One could say she didn't have a stable base while playing any of her shots. So, Julie, what's your take on Shafali's game plan for today? आई थिंक मुझे वही लग रहा है कि शायद शेफाली वर्मा को सिंगल्स लेके मैग्लैनिंग को ज़्यादा अगर स्ट्राइक देने की उनकी कोशिश रहेगी, बिकॉज वी नो कि मैग्लैनिंग इज़ अ फैंटास्टिक प्लेयर ऑफ स्पिन। और अगर वी आर अज्यूमिंग कि अगर सोफी एक्कलस्टन या दीप्ति शर्मा पावर प्ले के अंदर गेंदबाजी करने आए तो शेफाली वर्मा को कंसर्न्स होंगे। पर अगर यूपी वॉरियर्स उनके पेस अटैक के साथ शुरुआत करे तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए। पर अगर हम स्पिनर्स की बात कर रहे हैं तो उनका अप्रोच यही होना चाहिए, शायद सिंगल्स ले या गैप्स फाइंड आउट करे। और पहले 4-5 रन अगर उनको जल्दी से मिले, इफ शी गेट्स हर फीट मूविंग एज सून एज पॉसिबल, तो वो ऑटोमेटिकली काफी कॉन्फिडेंस भी दिलाएगा शेफाली वर्मा को। और उनको भी पता है, क्योंकि अगर उन्होंने स्पिनर्स के सामने अगर थोड़ा सा समय लिया, शी कैन कैपिटलाइज जब भी तेज गेंदबाज उनके सामने आएंगे। तो ज्यादा कुछ मुझे लगता है मुश्किलें नहीं होंगी शेफाली वर्मा को। ऑफकोर्स शुरुआत उनकी अच्छी नहीं थी, केवल 1 रन ही बना पाए थे मुंबई इंडियंस के सामने, तो उनको वो मैच जरूर भूलना होगा और आज एक फ्रेश स्टार्ट करेंगी शेफाली वर्मा, ऐसे लग रहा है मुझे। बिल्कुल। Now let's move on to our next matchup for today. Alicia Healy against the Pacers. Alicia Healy बतौर बल्लेबाज है, उनके अटैकिंग गेम के लिए उन्हें जाना जाता है। शी इज वन ऑफ द ग्रेट्स ऑफ द गेम, उन्हें माना जा सकता है डेफिनेटली। बट पेसर्स के अगेंस्ट वो काफी वल्नरेबल रहती है इनिशियली, और her average against the Pacers is a staggering 17.47 only. So पिछला मैच भी काफी खास नहीं रहा था उनके लिए. She was dismissed by Sophie Molyneux. But as a captain, आशा तो यही रहेगी that she leads from the front and provides an explosive start to the UP team. So Julie, what do you think will be Healy's approach going today? हीली मेरे ख्याल से ऐसी एक प्लेयर है, वो ज़्यादा सोचती नहीं है, शी डजंट ओवरथिंक अबाउट हर गेम। अगर बॉल उनके आर्क में है या जोन में है, शी विल गो फॉर द शॉट। तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा कुछ सोचेंगे एलिसा हीली अपने बल्लेबाजी के बारे में। और उनके सामने अगर आज हम मैचअप्स भी देखें तो दिल्ली कैपिटल्स के पास कौन से पेसर्स है, अगर हम देखें तो मारिजान काप है, शिखा पांडे है, अरुंधति रेड्डी है और एनाबेल सदरलैंड है। तो अगर ये चारों गेंदबाज अगर हम देखें तो उनके पास एक्सप्रेस पेस जिसकी हम बात करते हैं, जो शबनम इस्माइल के पास है, तो वैसा एक्सप्रेस पेस है नहीं। हालांकि काप और सदरलैंड काफी हद तक पेस गेंदबाजी कर सकते हैं, पर शिखा पांडे और रेड्डी मेरे ख्याल से मीडियम पेसर्स है। तो ज्यादा कुछ मुश्किलें नहीं होंगी एलिसा हीली को जब भी वो दिल्ली के पेसर्स के सामने अपनी बल्लेबाजी करने उतरेंगी। और मेरे ख्याल से एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है यहाँ पे कि उनकी जो ओपनिंग पार्टनर है, दोबारा हम कहेंगे WPL 2023 में जो ओपनिंग की मुश्किलें थी यूपी वॉरियर्स को, दोबारा हमने देखी है। वृंदा दिनेश उनके साथ सलामी बल्लेबाज के रूप में उतरी थी, उन्होंने केवल 18 रन करे थे पर 28 गेंदें उन्होंने ली थी। तो अगर एलिसा हीली के मन में अगर वो भी चल रहा है कि मेरे साथ जो बल्लेबाजी करने उतरी है वो प्लेयर, अगर वो अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेल रही है, तो शायद एलिसा हीली को कुछ ज्यादा रिस्क लेना होगा। और अगर ये रिस्क लेते हुए उनकी विकेट चली गई तो ये एक मुश्किल हो सकती है यूपी वॉरियर्स को। तो मेरे ख्याल से वो फर्स्ट मैच के बाद काफी डिस्कशन या चर्चा हुई होगी यूपी वॉरियर्स के खेमे में कि क्या अप्रोच होगा ओपनिंग बैटर्स का और एलिसा हीली का रोल क्या होगा आज। बिल्कुल बिल्कुल। The lack of a good opening partner with her, I'm not commenting on the caliber of the other player, but when she opens the batting for Australia, there's a Beth Mooney at the other end. So there's definitely going to be a difference in whom she's going to be opening with. So Pratik, what are your takes on Alicia Healy's approach today? It comes to us very surprising, right, that Elisa Healy does not have such good of numbers with the quicker bowlers, because we know the kind of caliber she possesses and the kind of strength she has in her base when she's facing the bowlers. But again, somewhere I feel that she's very skeptical about her approach. Even in the previous game, when she was dismissed to a spinner Molyneux, I just feel that her approach was very vague and she did not know as to how to get to the pitch of the ball. And that is not really Alisa Healy, the player we've known for all these years. And I just feel that it's the mind game she's playing and all the media talks that are going around. She just needs to shut all of it and stick to her basic game, that is to get to the pitch of the ball and drive it or pull it, or, she does that the best. So I would want to see that from her today. And yes, like Julie mentioned, when your partner isn't playing as quick as the innings you want on the other end, it does affect you. But I feel that she needs to stick to her game and not worry too much about her partner, because the role she plays in this team is very important for us. And so, yeah, I'm hopeful to
see her get runs today. Definitely, as you said कि वो एक surprising fact है कि that she's an Australian player and you'd usually associate कि ऑस्ट्रेलिया में pitches quick होती है, so your game against the pace is definitely better. But considering that her average is so low against pace, it is definitely very surprising. So, from a UV standpoint, the hope will be that she gets off to a flying start and UP are off to a good start at the end of the power play. So, अब ध्यान डालते हैं थोड़ा पिच की ओर। कल का मैच एज कंपेयर टू द प्रीवियस टू मैचेस काफी लो स्कोरिंग रहा था। इनिशियली देयर वाज मूवमेंट फॉर द पेसर्स विद द न्यू बॉल और स्पिनर्स काफी हद तक टर्न एक्सट्रैक्ट कर पाए एज द इनिंग्स प्रोग्रेस। Julie, what are your views on today's surface? Like, how do you think the pitch will pan out? ये अच्छा स्कोर हमें देखने मिल सकता है आज और कल की मैच अगर हम देखें गुजरात जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच तो गुजरात जायंट्स ने अच्छी बल्लेबाजी नहीं करी थी मेरे ख्याल से इसीलिए वो 126 का स्कोर वो डाल पाए स्कोर बोर्ड के ऊपर तो मुझे नहीं लगता कि वो स्कोर बिल्कुल भी जस्टिफाई करेगा चिन्नास्वामी के पिच को तो आज अगर मेरे ख्याल से दिल्ली कैपिटल्स पहले बल्लेबाजी करने का मौका उनको मिलता है तो एक हाई स्कोरिंग कॉन्टेस्ट हो सकता है पर अगर यूपी वॉरियर्स पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है दोबारा वो गुजरात जायंट्स का जैसा स्कोर था 126 130 उस बीच स्कोर हो सकता है तो वो काफी डिपेंड करेगा टॉस कौन जीता है पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय कौन लेता है पर ओवरऑल आई फील कि पिच बल्लेबाजी के लिए काफी अच्छा होगा और स्पिनर्स जैसे कि हम बात कर ही रहे हैं स्पिनर्स का रोल काफी इंपॉर्टेंट होगा उनको काफी टर्न ग्रिप और बाउंस भी काफी हमें देखने मिल रहा है स्पिनर्स की तरफ से खासकर लेग स्पिनर्स की ओर से और यजाद और प्रतीक मुझे यहाँ पे जस्ट हाईलाइट करना है अगर हम ये दोनों टीमें देखें ना दिल्ली कैपिटल्स के पास एक लेग स्पिनर है ना यूपी वॉरियर्स के पास एक लेग स्पिनर है तो मतलब अगर हम प्लेइंग 11 का पहला मैच का देखें तो अगर एक लेग स्पिनर का इंट्रोडक्शन या इंक्लूजन अगर हम देखें तो वो एक अच्छा पॉइंट हो सकता है ये दोनों टीमों के लिए Yeah, as you rightly touched, that neither of the teams featured a leg spinner in their first match. There are definitely some changes on the cards. Pratik, what about you? What is your pitch report? Well, yeah. So, thinking from the viewpoint of a fast bowler, I don't really think that there's much for the bowlers and the batters who've been dismissed. It's purely because of some rash shots or decisions that did not go out their way. Although the fast bowlers at the back end of the innings could look for the slower ones because we very well know that the ball is gripping well there and it is also slowing up. And we've seen it on multiple occasions. Batsmen perishing for the slower short deliveries, by getting a top edge. So we do know that the ball is slowing with turn at the back end of the innings. So yeah, I'm hopeful that the spinners capitalize on this. And as far as the fast bowlers are concerned, pitching up it only means one thing that they're going to disappear into the stands. So keep it a tight length, and for the batsmen and for the batters, just go out there and enjoy your game. Definitely. So let's quickly take your predicted 11s for today. Pratik, you go first. Let's start off with UP. Okay, yeah. So I would again start with the same opening pair, that is Alisa Healy and Vrinda Dinesh. Even though Vrinda didn't get off to a quick start, we did see that she played some good shots, but couldn't keep up with the run rate. So these two would open for me, and then Talia McGrath, Grace Harris would play as the middle order. Experienced contenders, foreign players would adopt the attacking game out there. And then for me comes Kiran Navgire. Although she went out for a rash out in the previous game, I would like to give her another opportunity because you really cannot judge a player in just one innings. Then would come Sweta Sehrawat for me. I've put her a little lower down the order so that she provides the much required push at the back end of the innings with her fiery blows. And then Sophie Eccleston and Deepti Sharma, the two spinners who are also very handy as batters. These would come for me there. And then Rajeshwari Gaikwad, Saima Thakur, Poonam Khennar. I would keep this unchanged. They've done a good job, and I'm hopeful they restrict the opponents today as well. Definitely. Now a quick look at Delhi's playing 11 for you. Yeah. So again, the opening remains the same for me. Meg Lanning and Shafali Verma, the combination of an experienced contender and someone who plays fearless cricket, wonderful for cricketing fanatics to watch. Alice Capsey, we've seen what a cracker of a game she's had.
previously, so she would be my number third. And Jemima Rodriguez, need I say more? She just came on and got started with all the fireworks. And then comes Madison Cap and Annabelle Sutherland, the foreigners, who would again play a very important role. And I would want for them to play with a little more maturity, because the batters at the top have the green signal to go after the bowlers. But if they falter early, it's for them to look after and steady the innings. Thania Bhatia would come, and then Arundhati Reddy. Arundhati Reddy, who's also been bowling and who's generated some quick pace, hit the Yorkers well. So I'm excited to see her do both batting and bowling as well today. Minnu Mani, who did not get an opportunity in the previous game, I'm eager to look at how she would tackle the opponents when given an opportunity today. Radha Yadav and Shikha Pandey would be the bowlers I would bank on. So yeah, this is my Delhi Capitals 11 for today. So, Julie, after an unsuccessful outing for the both sides, what do you think are the changes that could be made potentially? Actually, even I'm not making any changes to the playing 11. I'm sticking to the same playing 11 which they featured in the first match, respectively for UP Warriors when they played against RCB. I think same lineup, same playing 11 continues, and I think Pratik has elaborated well about all the players in the playing 11. Vrinda Dinesh, yes, I think UP Warriors will give her one more chance because last season also we saw that they did not switch the opening pair in the second game itself. Shweta Sehrawat opened with Alisa Healy for the first two matches, and then they tried, I think, Devika Vaidya. So I think Brinda Dinesh, it is up to her to grab this opportunity because we have seen that she's an exceptional fielder. So that is what adds to her game as well. And if she can contribute with the bat, I think UP Warriors will have a settled opening pair. And apart from that, I think rest of the playing 11 looks similar. Though I would be tempted, as I said, to play a leg spinner, probably say in Parshvi Chopra. But I don't know whom to replace. Probably Rajeshwari Gaikwad is the only player I can think of replacing. But she picked up two for in the previous match, so I don't know whom will they replace. But any which ways, this is the UP Warriors playing predicted playing 11 from my side. And what about the Delhi side? Delhi also, I'll stick to the same playing 11 which they had against Mumbai Indians for the same reason that this is just the second match of the season. We do not want to make any changes. But as Pratik rightly pointed out about Minnu Mani, she did not get a chance with bat or with ball. Probably, if they want to play a leg spinner, again I'll talk about the importance of leg spinner because if Delhi would have seen UP Warriors match against RCB, Asha Shobna picking up a fifer, and Delhi Capitals do have a quality leg spinner in Poonam Yadav. So if they can think of replacing Minu Mani with Poonam Yadav, probably they can think of that. Otherwise, the rest of the playing level looks quite similar to the first match. Definitely, as you added the leg spinners, एक crucial role खेला है उन्होंने throughout the three matches of the tournament, be it Amelia Kerr or Shobna Asha. So, guys, let's quickly take your predictions. Pratik, who do you think is going on to win to this match? Well, so today I would back the Delhi Capitals to go out there. Meg Lanning, the skipper, someone who comes with a plethora of experiences, and she's pulled out Australia from many such scenarios, where they've had a losing streak. And also, the middle order firepower that comes with this team is something immaculate. You've got one player after the other to go after the bowlers, with no fear at all. So I'm backing them. And on the bowling front as well, they have done well. They lost their first game by whiskers, but I'm backing Delhi Capitals to get this today. Okay. Julie, what are your predictions? Similar to what Pratik has, and I feel very fortunate that Pratik and me, both of us, we are able to predict it quite right. First three matches, we have got it hat trick of wins here in case of predictions. So I think yes, Delhi Capitals are here to win the match. Probably as we saw yesterday, Gujarat Giants were 0-2 down against Mumbai Indians, and UP Warriors are also 0-2 down against Delhi Capitals. So probably a third win on the trot for Delhi Capitals, I'm assuming. Definitely, Delhi start off this encounter as the favorites, but could UP Warriors potentially ruin their party? Uh, I'll see you all again tomorrow in yet another exciting episode of Female Cricket Live. It's goodbye for now from me, Pratik, and Julie.